third day. And now we are with us Anurag Jagatia sir, Assistant Professor from MLBTI College, Bhilwara. So I would like to request Sanjay Sharma sir to kindly introduce Anurag Jagatia sir. Sanjay sir, please. Hello, Prashant sir. Yes sir, good to Am go I sir. audible? Good to go sir. Shall I start? Yes sir. Good afternoon, everyone. This is Sanjay Sharma welcoming you all from GPC Barmer. पोस्ट लंच जो सेशन होगा वो आज हमारे अनुराग जागेटिया सर लेंगे. इनका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं. अनुराग जागेटिया जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं MLB टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा में. आपने अपनी बीटेक और एमटेक ऑनर्स के साथ पूरी करी और अभी PhD RTU से परस्यू कर रहे हैं. इनको लगभग 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और इनके कई आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स और नेशनल लेवल के जर्नल्स में प्रकाशित हो रखे हैं. और आज ये जो टॉपिक हम लोगों के साथ शेयर करेंगे वो है वेरियस साइबर अटैक्स, ब्राउजर एंड सोशल मीडिया अकाउंट सिक्योरिटी. तो आई वेलकम मिस्टर अनुराग जागेटिया. So Anurag Jagatia sir, if you can Shall hear I start, us? sir? Yes, sir, definitely sir. Okay. Thank you, Prashant ji or Sanjay Sharma ji. Thanks a lot, sir, for giving me this opportunity to be a speaker in this wonderful workshop. So the topic given to me is the various cyber attacks and browser and social media account security. So here we start with this interesting presentation. So first and foremost is what is cybersecurity? So let's see the brief definition of cybersecurity. So according to Wikipedia, cybersecurity or computer security or IT security, or we also call it network security many times, is the protection of computer system from theft or damage to the hardware, software or electronic data, as well as from disruption or misdirection of the services they provide. It simply means the cybersecurity is the theft of your essential electronic data, software and hardware, as well as the disruption. The term disruption, it says, for example, in order to understand this word disruption, we can take the example of surfing a website. If you want to surf a particular website and you are not allowed to access that particular website by someone, okay, so this is the disruption of the service. Or direction is something, let's say if I want to access a particular website X, but I am reading falsified website Y, so that is the misdirection. So this also comes under the cybersecurity. So why we are discussing this cybersecurity in much detail is because the electronic attack is something which can be launched at a target anywhere on the globe from pretty much anywhere. It means, since we all know, friends, that internet is simply the network of networks, it means all the devices and computer systems which are on internet are somehow connected with each other through this internet. So this gives the access to the people, those who are sitting at far remote place, to gain access of your computer system or your data from one country, in fact, to another country. So I have just highlighted this news of India today that says the China is continuously posing threat to India. In fact, you might have also gone through these kind of news that are in our English or Hindi newspapers daily, that most of the time these Chinese hackers, they are trying to hack the websites of Indian intelligence services or Indian defense services or Indian home affairs services, like that. So that's the meaning, that's the danger, is the cyber attacks are posing to a nation. So why cyber security matters? Just to understand this, I'll just give you a very simple example. So there was a news in 2018 that the Facebook breached, the Facebook, which now is known as Meta. There was a news in the media that the personal data of 50 million users exposed to hackers in latest attack.
So what I mean to say is the Facebook is the IT giant of this world. So when the Facebook can be hacked, it means it is really a worth sensitive matter that we all should be very careful about, and we all share many sensitive information to Facebook or Instagram or Twitter these days. So it gives hackers the access to of our personal data. So he is the sad face of Mark Zuckerberg, you can see over there, over here. So some more theoretical definition why cybersecurity matters is, as we all know, friends, that the society's increasing dependence on information and communication technology infrastructure that creates vulnerabilities and opportunities to be exploited by dishonest people. Friends, we all know that our dependence to the ICT infrastructure is increasing day by day. In fact, due to this, or we can say post-COVID pandemic, this digitization is expanded to a new horizon. So the data consumption of our daily life is increasing in an exponential way. So that says, in fact, you know, friends, that we are doing more and more transactions through internet banking or UPI UPI platforms. In fact, to order food only, we take the services of Zomato, Swiggy, or something like that. To book a cab these days, we take the services of Uber and Ola. So our daily life activities are much more dependent upon this ICT infrastructure. So there is a term vulnerability, which we'll discuss in the coming slide. So therefore, in fact, most of the people share their daily life activities on to the social media. Where are they going? What are they eating? So many things. So if this data or the detail is will not be secure, this can create that this may lead to some possible danger to us. So we'll discuss all those things in the coming slide. So why this cybersecurity matters is it can be highlighted in this quote is the loss of sensitive or private information related to individual, public or private entity, corporate house, etc. that may lead to loss of money, reputation, stock price, etc. For example, let me just give you the example. Let me re-quote the example of the Facebook data leak problem. So what do you think? Once this news was there in the media, the impact of such news can be seen in the stock price of Facebook, in even on the next day on the Wall Street. So that is what is there. In fact, at the same time, there is a huge loss of reputation also. So this is the problem. In fact, this is not only about Facebook or big corporate house. For example, if anyone would share some of your private photographs or anything else related to your privacy onto the social media account without your permission, okay, that also comes under the, I mean, that is also the violation of this cyber security norms and rules. So this may create many problems to us or to our personal or family life as well. So therefore, this is a very crucial point to be understood. Now, whom it affects, whom the cybersecurity or the loss of information it might impact. So we can see potentially anyone who relies on digital infrastructure in their lives, regardless of their location. And friends, as we know, that I don't think or there will be anyone in this world these days who is not dependent upon this digital infrastructure in one or another way. So most of us are using smartphones. In fact, these days it has become very cheaper. So most of the people in this is the telecom revolution as well. This is the data revolution. We can see soon we are entering into the world of 5G. So there will be again, this will be the telecom revolution. Like so it will take internet onto a next again on a vertical. So our lives is completely dependent on digital infrastructure or this IT world. So whom this can impact? It can impact the individuals like you and me. It can impact the commercial enterprises like we discussed, Facebook, in fact, Google, or big companies, e-commerce portals. It can impact governments. So if the governments are being attacked, as I mentioned, the impact of, let's say, the Chinese hacker penetrating into the Indian government agency's website or Indian private data. So this may lead to loss of our sensitive details, our bilateral
plans, a defense plan, etc., etc. So this may give the enemy a very good insight of our preparation and so many things. So this can be again a very tough situation. In fact, many people says the coming wars will not be like the conventional wars. So the coming wars will be won by the cyber tactics. So it can impact to the international organizations like Facebook and Google. So potentially we can see this can impact from into big organization. And what could be the impact? What could be the impact of cyber attack? So a successful cyber attack can cause major damage to organizations or systems, as well as business reputation and consumer trust. So do you think this, what is a consumer trust? It's an important thing here. So as we discussed earlier, that if the data through Facebook can, so definitely the trust of a person on Facebook will reduce. So this may cause the consumer to shift to some other social media site, something like Facebook. Or so this is just one example. So this may cause the trust of your consumer to go down. And what could be some potential results these cyber attacks? So that includes the financial loss, which is one of the very important aspects, especially in terms of organizations or companies when we are talking. Damage of reputation. So again, if we are dealing with some sort of personal data, so it might damage the reputation of the individuals due to the cyber attack. This may damage the reputation. If, for example, let's say if your Facebook account has been hacked by someone, and they can post anything from your social media account, so your friends are onto the social media, they will believe this is you. In fact, this practice is common. I don't know you have this idea or not, but I have faced this problem many times, that I received an email from some few of my friends, that they stuck in some situation and they need some help. So can I transfer them this much amount of money right now? So this is the kind of situation. Their emails were hacked, or their social media accounts are hacked, and the hacker used to post such sort of message that can you transfer this much amount? And in fact, many people used to transfer such amount. So this is the loss of reputation later on, when they realize that their accounts are hacked and they were misused by some wrong purpose. So this is what the reputation damage, and then these all things ultimately leads to the legal consequences that might include the problems related to intellectual properties, etc. The attackers, very interesting point is, who are these attackers and what they want from us? So for example, although there is a very broad classification of the attackers, so we can discuss briefly. So let's see, there could be terrorists, for example. So there was a case study of Mumbai blast, 26/11 Mumbai blast, and it was found that terrorists used an unsecured wireless network. There was a guest who was living in nearby to the Taj Hotel. His or her wireless network was not secured. It means they were not using the password, or they might not be using the strong password. So hackers or the terrorists at that point of time, they used that network to transmit the information between their headquarters, like that, and later on they realized, and when they caught up that foreigner, they found that only the network of that person was used, and it was not a secure network. So mostly these people like terrorists, they use such sort of cyber attacks and all. So what could be the other category? The other countries or spies, as I discussed, the case of China. Similarly, the newses were there of Pakistan also. They were also having trained cyber hackers. They keep on trying hack Indian government websites, like that. The spies, this could be a very useful for the other nation, the secret data to collect military information or strategic data of one country, so that it can be used by other countries. And there could be some bad hackers. Bad hackers, it means those who are very trained IT professionals, but they want to misuse their knowledge to some financial benefits,
or to make some sort of losses to you. Okay, we'll discuss the case of this financials and all in the coming slides. And there could be some bad guys. There could be some IT people, or the people just they are doing the hacking for, they don't have any financial interest, but they just want to prove themselves that we are very good in doing hacking. So they could be these cyber attackers. So let's take this a very brief idea of information security triangle. There are three important terms of information security. Is C for confidentiality, I for integrity, and A for availability. So we call it CIA triangle popularly in terms of when we are discussing information security. So this confidentiality simply refers to the protection of your information from unauthorized access and misuse. It means if two persons are talking with with each other, we don't want any unwanted person to listen our communication. Okay, so this is simply is the term confidentiality. The integrity simply refers to the protection of information from unauthorized alteration. For example, if I transmit a message to one of my friend, let's say, and I want that message to reach as it is. I don't want anyone to modify the message in between. Okay, so this is what is the unauthorized alteration. So if anyone in between access the information flow and changes the information, so that is a loss of integrity, we can say. So there must be integrity. Whatever I sent, that should be reached as it is at the destination site. The availability. So it's also an important term that says if I want to access information at any particular time, that information or that electronic data must be available at that point of time for access. If to access that particular data at that point of time with some bad intentions, so that is the, we can say, the loss of availability. It means I am not able to access that data which is being prevented by someone intentionally. Okay, so for example, if I want to visit a particular website to see my result, and some bad hacker has put that website down. Okay, there are some many IT attacks we'll discuss later. So with those attacks, if they have down the website, okay, so I won't be able to access that website at that particular time. So this will be kind of the loss of availability of information. So this is also the important term. Just to see this very interesting diagram. So there is a flow of information from sender Alice to receiver Bob, and there is an intruder. There's a bad guy. Intruder is a word that refers to the people who try to view or access your information without your permission. So we call him or her intruder. So here you can see this is the interception. Simple. The intruder is intercepting the data. This is the simple example of the phone tapping, which we can see in many movies. There is a phone tapping. Okay, so that's the interception. We call it interception. This is the passive kind of attack. So this is a very broad classification of attack. So just quickly, we'll summarize this. In the diagram A, on the top, we can see there is a flow of information from source to destination. In the diagram B, the flow of information is interrupted by, let's say, some hacker. So we call it interruption. Okay, the flow is interrupted. It is something like I want to talk to you over a landline phone, and somebody has cut the telephone line. Okay, so this is a very basic example just to give you an idea. So we call it interruption. Okay, then in the diagram C, we can see interception. Since we have seen this in the previous slide, it simply says if there is a flow of information from source to destination, there is a bad node who is listening to the communication or accessing the communication. Okay, without your knowledge, because see, in phone tapping, we don't know that phone is being tapped or somebody is listening to our communication passively. So this is a very dangerous sort of attack because we don't know that we are being attacked. So in the diagram D, you can see there is a node who is accessing the flow from source, and then he is regenerating. So it simply says the information is being modified.
So there is a bad node in between the source and destination, who is capturing the data from source and later on modifying and sending to the destination. So this is the modification. In information security, this is also called man in the middle attack. There are some attack based upon this philosophy. Those are known as man in the middle attack. In the diagram D, we can see there is no data from information source while there is a bad node sending the data to the receiver on behalf of source node. So we call it fabrication. So there is a falsified information being sent to destination, pretending that the information is coming from original source. Okay, so this is a very broad classification of attacks. So what are some popular terms of cyber security? So what are some threats and attacks? So all of you might have gone through these terms in your lifespan. So we have just categorized them. So there is a category of malwares. So in this malwares, we have put the softwares that has some malicious purpose. Okay, these are softwares which has some malicious, which is bad purpose. They are having some bad purpose. For example, virus, Trojan horse, spywares. We'll discuss in the coming slide. So these are the softwares, or we can say programs. Okay, software is basically a set of program. So these are the programs which are having some bad purpose. Purpose could be varied. They could be different purposes based upon the author of these codes. And there is a term intrusion. Intrusion is something to enter system without the permission of the owner of the system. Yeah. So it says the attempt to gain unauthorized access to a system. So the popular attacks in this category are attack, there are zombies or masquerade attacks. So these are the names of the attacks. The social engineering, we'll discuss all these. Social engineering, what is social engineering is. Denial of service attacks. So these are the categories of, these are the broad categories of attack. Discuss some of the popular attacks. So if just you want to get an idea of what is a virus is, we heard this term many times that our system is being infected by virus. So what is basically a virus? So virus is a computer program. It is a computer program. When it comes to your system, it insert itself into your files, okay, and then keep on replicating those files. Okay, so that's the viruses. Similarly, there is one more term, worm. Although most of the time these terms, virus and worms, they are being used in a similar fashion, but worm is something which is a standalone malware. It don't insert itself to any software, to any file. However, it spread itself in your computer program. Okay, when it comes to your system, it keep on spread itself. Okay, so both the virus and worms are, we can compare them like a biological virus, okay, which when comes to our system, it try to keep on increasing its growth in our body, okay, which ultimately leads to the harm in our harm to our body. These are the terms virus and worms. Horse, it's a very interesting form of malware. It's also a sort of virus, you can say. So what's the difference is, so a program that claims to free your computer from virus, but instead introduces virus onto your systems. It is something, as I've shown a diagram also. On the left hand side, you can see the wooden horse. So it comes from a very interesting story in Greek mythology. There was a king who sent a gift of wooden horse to another king. But inside in that horse there were so many soldiers. Okay, so they came out from the whole horse in the night, and they have just destroyed the another king's kingdom. So that was picturized in the movie Troy as well. So from that story, the idea of Trojan horse came. So it is a virus which comes as which you won't be able to recognize it as a virus. You will install it like utility softwares. Okay, let's say for example, you have find out a software onto the internet that claims that it will clean up your hard disk. Okay,
you download it and you just, or it claims that it will improve the speed of your software, the computer system. You just download it and run it, execute it, but you don't know that behind the scene this is stealing or copying your important data and sending it to someone else, might be the author of the to this, or the owner of this virus. Ransomware, it's an important term, ransomware. We'll see some example of ransomware. So ransomware are the malwares that prevents or limit users from accessing their system, either by locking the system screen or by locking the users unless a ransom is paid. For example, you can just to give you a very simple idea of ransomware is, let's say we have a naughty kid in the home and he got the access of our mobile phone and he has changed the key, the pin of your mobile phone. Okay, and he asks you that you need to buy me this toffee if you want to know the pin of your phone. So this is a very simple example. Somebody has logged your data, and since we have to see so many messages or social media things or many transactions is to be done through mobile. It means we can't live without a mobile phone these days. So we have to, convince the kid. So the ransomware is simple. It's the same thing, but here in this case, the someone who is locking your system is not your kid. That person is a professional, and that person is doing it for ransom, doing it for some money. They are locking your system. Okay, you don't know that your system is being accessed and locked by someone else, and you are not able to unlock your own computer system. Entire your data is being locked by someone else. This is what is the ransomware. The keylogger, it's a surveillance technology. So if someone has installed some keylogger softwares into your system, and whatever keys you type whatever keys you type will be stored in that log file of keylogger. For example, you might be thinking how this will happen if we use the, let's say, computer system at some public place, let's say in any internet cafe or at some unknown place, at some hotel. You are using computer system of someone else. They might be running keylogger softwares, and these kind of softwares are running passively. It means you won't be able to see that there are some sort of keylogger softwares are running in the background. So okay, you won't get any idea. But what will they do? Whatever, so let's say you are accessing your internet banking. So if you type your ID and password, so they will they will record your ID and whatever you type through your keyboard. If you're typing your ID, your password, whatever things you have typed through your keyboard, so that will record everything. So in order to prevent keyloggers, you might have seen the virtual keyboard onto the banking website. You might be wondering why there is a virtual keyboard over there. So now you might be able to relate that virtual keyboards are there only to avoid such sort of keylogger attacks. Okay, so therefore virtual keyboards are there. So here is a survey by Sophos. Sophos is one of the biggest antivirus company. So there was a survey that says that India is the most targeted country for ransomware attacks. And according to a survey conducted by network security firm Sophos, around 67% of Indian organizations were hit by ransomware, which cost around $1.17 million to rectify the impact of attack. So here you can see in the diagram, in the image only, you can see that your system is attacked. So and in order to get the ID or the password or to unlock your system, you have to pay to those attackers. So this what are the common threats of ransomware? Let's see. So it comes into a system through a download link attachment, email or some website. You accidentally visit some websites and then you download them as a utility software like a Trojan. So, and they will either lock the screen or encrypt your data. So encryption is a word. It means your data will be there, but it will be encrypted. So you must be aware with all of you are using WhatsApp. So WhatsApp says we are using end-to-end encryption. So end-to-end encryption, or the encryption, what it says, so whatever data is there, encryption will make it non-readable by human beings.
Okay, so for example, human beings like you and me, we can go through we can read the text like English, Hindi, or whatever language we know. But encryption is something, if you scramble the data, if you just if I make some permutation combinations of the data, so it will become unreadable, non-readable by human beings. So we need some sort of key to again decrypt the data. So such sort of things. And once the ransomware is uploaded on your computer system, it is very difficult to remove without removing all of the data. So that's very crucial task, because the data is very important these days. Once we lost the data, we won't be able to recover the data. This is a screenshot I have just. It's one of the very big attack of where that occurred in 2017 or 18 perhaps. So this is the screenshot. Once you have got the ransomware, and once they have captured your system, you won't be able to use or access your files. So you will get the screen like this. So now you have to pay them, and you can see in this diagram what they have used a method of Bitcoin. They have used the cryptocurrency, so you need to pay them through cryptocurrency. Okay, so once you pay them the desired amount, then they will give you the access of your own system. So this is some sort of the physical ransom, okay, which is now is converted into a digitized word, and it became ransomware. So the impact of ransomware. So this is a WannaCry attack in 2017, as I mentioned earlier in the previous slide. WannaCry was one of the biggest ransomware that impacted the computer system, mostly those which were using Microsoft Windows. And it was the biggest attack, and which impacted around 3 lakhs computer across 150 countries. Many big companies like FedEx, Spanish Telecom, gas companies, German Railway, Renault. So this was the very biggest attack, ransomware, uh, and it impacted Windows computer systems. In fact, so is a slight history of all this WannaCry attack as well. So the companies keep on releasing updates of their mobile phones. If when you are using many apps, so time to time we have to update our apps. What is the advantage of updating our apps? So for example, if you are using, let's say, Android, or you're using iOS, so time to time they are releasing their patches. We call them updates, important updates. We should not ignore them. Whenever the company is releasing the updates or patches, we must update our system, because these patches are very essential. The same thing happened in this case also in WannaCry attack. The Microsoft released patch that they found that there is a vulnerability in their code, in program. There is some issue in their operating system. They found that out, and they have released a patch. But many people, they have ignored the patch. They didn't updated their Windows using that patch, and what result of that, they were being impacted or attacked by ransomware WannaCry. So that is the important learning. Okay, and how to tackle the ransomware. So backup is one of the important ideas. We all should keep backup of our data. Okay, or we can keep the data on cloud. Google Drive is very name of cloud. In fact, you might wonder to know that Google Drive keeps your data backup at 3 places. It means 3 copies of a data is being preserved by Google Drive only. So they have a very good mechanism of security and backing up of your data. You can buy some extra space also from Google, so to keep your data secure. Patch is important idea. Patch you can consider like the update of your software update, your app update. So keep your software up to date. WannaCry attack or WannaCry ransomware was successful as those affected computers were not updated, and the update contained a fix for the problem. So as I discussed earlier, so if you keep your system up to date, you won't be attacked. From this problem only, I just relate you with the idea of the original softwares. So many of us, in fact, we in our routine life don't buy the softwares.
mostly, especially in the operating system also, we'll talk of Windows, we don't buy. Most of the time, we just use a pirated version. So when we are using pirated version, it won't be able to, update itself. It won't be able to download the patches. So when the patches won't be downloaded, your window will not be updated. So you become vulnerable, became susceptible to those attacks. Okay, so that's why we should always, pay for the softwares or the Windows or whatever the operating system which we are using, because if we won't pay them right now, we might have to pay some attacker the amount. So it's better to keep or to buy the original softwares. And then is the attachments. Many times we get some fraudulent links through social media or through emails or through SMS, so we should not click them. So they may lead us to some sort of viruses. Okay. One more interesting is the spyware malware. This is one of the kind of malware. So a spyware is a software that is downloaded onto your computer to track your activities without your knowledge. So this is a passive attack. Okay, we can categorize information security attack two type, active and passive. Like we have seen, this is some sort of active attack. Okay, when you know that you have been attacked, okay, and you need to get out of this attack. In the passive attacks, you don't know that you are being attacked. So spyware is something, they are the malwares. They keep track of your activities. I mean, whatever thing doing onto your system, what websites you accessing, okay, everything about, they create a log file of your activities and everything. They monitor your surfing habits. Okay, and many times companies are using these spywares and just not to not to make any harm, but just to know your buying interest or your shopping interest. Okay, so in what things you are more interested, so that they can send you relevant ads or they can sell their products to you. Okay, so these are the spywares. Very important attack, phishing attack. Phishing is the fraudulent attempt to obtain sensitive information such as your username, password, details of card. Okay, and by disguising as a trustworthy entity. Okay, so what is the problem is phishing attack is something, it says the phishing like we do. Okay, we try to attract a fish by some sort of some small sweet or something like that. So similar to that, phishing attack is something they try to steal your information. Okay, so mostly what happens when this kind of links, when we get, let's say, some link emails uh, from some unknown person, they claim that they are from some bank, and if you want to change the ID or password or you want to register your KYC, you just click onto this link. Okay, and when you click onto this link, they lead to a fake page of that particular bank, fake page, and the fake page looks similar to the original page. That's the problem. So you enter your ID and password in that fake page and boom, they took all your ID and password. Not the actual banking website, but that was a lookalike website, and also having the same website URL, but we hardly see the URLs. We only see the graphics and everything. We found it's okay, it's looking same to the website, so we just enter our ID and password, and they took all the ID and password. So how to tackle this problem is to don't click any links on an email unless you can guarantee who it's from. Okay, the advice is, if you want to go to the banking website, just type the banking website and go on to that. If you are receiving any links in your email, or don't click links. Okay, use a trusted method of contacting the company via phone number, apps, or website. So the same case happened some days back. There was a news in the paper that the SBI's YONO app is not working. So there was a senior citizen person, and he simply Googled out the number of SBI YONO, something like, and he found some number through Google, and he dialed those number, and then some hackers. There was not the number of SBI bank or the YONO contact person help desk.
So there was a number, he googled out the number. So one thing, he should not find such numbers through Google. If I want to contact the banking persons, I must found that number onto the website of the bank. So he got some misdirection, and a lot much money was taken by those hackers. Okay, so there was a news recently. If you are getting fraud emails, don't forget to mark them as spam. Okay, you should keep mark them spam. If you mark them spam, Google will notice, or the mail provider will notice, keep on notice such emails. Okay, to that they are spam emails. This is one example of a falsified email. So it says, the first thing, the fake sender domain, the domain name. For example, if you receive an email, let's say something like service at the rate, let's say hdfcbank.com. Instead of bank, it could be bamk. Instead of n, there could be m. We hardly notice that there is a m instead of n. Okay, we believe this is from HDFC Bank, and there will be some link given to us in that email, like the one shown in the diagram. There will be some link given that says login your account now. When you click onto this, you will be redirected to a fake page. Okay, that fake page will be again a website name, HDFC, let's say BAMK, okay, .com. Okay, so that will look similar to HDFC Bank, but that is not the website of HDFC Bank. That is a falsified website. Okay, and you will log in. When you will enter your credentials will be copied. Okay, so this is a very bad situation. So we must avoid clicking the links which we receive in the emails by such email spammers. We call them email spammers. Let's see, there are some real-time examples. These are the cases which happened, that email scammers took money. Okay, let's say, in fact, people, they were targeting the specific people. Let's say they were targeting people, those who wanted to buy house, for example, and find out with the help of spywares. Okay, the spywares give you the idea that because when you want to buy a house, you will keep on search over internet regarding the property and regarding the best bank loan offer. So such people, the data of such people will be available through the spywares, and those scammers can target those people because they know that these are the people, they are having ready money available to buy some house, so we should target them. Okay, now when we talk of browser security, so when we are surfing the internet and a browser, what to look out when we are doing, let's say, shopping or browsing onto the internet. So one thing which you must ensure that you are on the correct website. Okay, and how to make sure that you are onto the correct website is the HTTPS. Okay, here you can see in the diagram, there's a in the browser, you can see that there is written secure with a lock sign of green color. So there is an HTTPS. Okay, that S stands for secure. It means your connection is a secure connection. This is the encrypted connection or the secure connection. Okay, and this is the genuine connection, and this is the actual website of, let's say, particular bank or Netflix, whatever it is. How it looks in different browser. So if we talk of this HTTPS, if we talk of Explorer, Firefox, Chrome, in different browsers, it looks different, but mostly there's a green sign and there is a sign of lock that indicate that this is the HTTPS and your connection is secure. We must secured connections. Okay, what happens basically when we talk of secured connection? So here is a very simple example. Okay, there's a scenario of banking. Let's say this is the this is an old one. That's why it's SBBJ, because now it's SBI. There's an old scenario that says when you're using any banking website, when we enter our ID and password, okay, so the ID and password are encrypted by there is an encryption scheme. So we won't go in much detail of encryption scheme. So basically, whatever, if we are using HTTPS, what happens? Whatever data or whatever ID and password which we are entering, they will be encrypted. I mean that you can see in the diagram that the username and password in the blue box,
Then in the yellow box, they are converted into a non-readable format. So we call it, let's say, encryption. Okay, so data is encrypted and then went over to the internet and received to the server. The server will again decrypt the data. Okay, server will be able to decrypt the data and use the ID and password. Okay, so that makes sense. HTTPS, S stands for secure, so that ensures what data or the ID passwords which we are sending will be encrypted, okay, before going on to the server of your bank or any website which you are using. Many times we receive this kind of SMS that let's say you have received this SMS that says we have tried to contact you about your internet banking account. We have limited account due to recent activity. Visit the secure link. Okay, and when you receive such sort of shocking message, you immediately click onto this link, and this link will lead you to a fraud website of that particular bank. Okay, I mean that website will look like your bank website, but that is not the original one. In fact, I received a similar SMS from the bank that says your KYC is not updated and you need to click on this IP address. Okay, just make sure we have put your account on hold. We have suspended your account. So you will be panicked that my account has been suspended. So immediately you will click onto the link. Okay, so that is really a very, this is the way these people, the attacker or the hackers, they can give you this sort of link, and they can easily hack your account and all these things. So we need to be very careful that we should not click on to such IP addresses. This is known as IP address. Okay. So never click on these SMS. Okay, and in fact, you will keep on receiving the messages from your bank that we never ask your OTPs, we never send you any links, such sort of links. Okay, but despite of all these facts, uh, people made mistake. Okay, they made mistake and uh, they got stuck by some cyber attacks and sort of. So when we were talking of HTTPS, we must also notice this HTTPS also incorporates so many digital certificates also. A digital certificate is a certificate, or you can say it's a signature. It's a sort of digital signature. Like we have every one of us is having a signature, which ensures to your bank or your that you are the original owner of your account, because you have the unique signature. Okay, similarly, there is a concept of digital signature also that ensures that your digital identity. Okay, that's the guarantee of your digital identity. Okay, to the, let's say, to the website which you are accessing on and all. So here I have shown an interesting diagram that says if you click onto the browser, that green part, you will see all these details. So these details says that the websites are being secured with digital certificates. The connection is encrypted. Okay, and these all the things. These are technical details of integration of information security that indicates that whatever connection which we are using is authenticated. Well, now we should go ahead with this. Okay. So again, this is one of the example that says so much amount has been lost and bank is not helping us. So definitely bank won't help you out, because this is not the problem with bank, because bank is keep on alarming you. This is not the case that bank won't do anything. If we lose anything by the name of any particular bank, it's not their responsibility. It's all up to us that we should be aware with this digital world. One more is essential thing is when we are using some public Wi-Fi networks, because these are the public Wi-Fi network, they may not be trustworthy. Okay, so when you are dealing with public Wi-Fi networks, what you should do and what should you not do? So when you are dealing with, say, let's say, public Wi-Fi, let's say in a cafeteria, in a railway station or some airport, you got some public Wi-Fi, and it's a normal human tendency that we to use that particular free data. Okay, so we switch off our data and try to use the public Wi-Fi.
So what should you not do in the public Wi-Fi? When you are dealing with public Wi-Fi, you're connected with public Wi-Fi, don't use your online banking or don't perform any purchase or transactions. Okay, you can do some video surfing, you can play YouTube or some videos, music like that. That's perfectly okay, but don't use that for the transactions and all. Or you can use a virtual private network, that's a bit more technical thing. So it's better not to use your banking things over a public Wi-Fi. Scam just I try to cover is the ATM card scheming. So this is a new way of hacking your the magnetic card detail which you are having, because so you can see in the image here, in the left hand side image, there are two images in which the one image is indicating a skimmer. So a skimmer is a device which is appended onto the original place of swiping the card. Okay, what happens when there are some ATMs in far remote places, when there is no guard out there? So there are some attackers or the people, they can put the scammers, okay, over there. So this will store the magnetic data of your card. Okay, and how to get the pin? They can get the pin by just there are people, when you are withdrawing money, they are standing in front of you just to. Okay, so that is the best practice that says always in the right hand side image it's given, you should use your hand like that. You should not disclose your pin. Okay, because once your pin is disclosed and your card details are out, they can create or recreate the cards. And you will wonder that such skimmers and all these devices are available easily on Alibaba and all such portals. Okay, so again, the one idea advice is to not to use the ATM card, your ATM card over machines which are in a far remote place or where there is no guard available. Okay, so that's just an advice for it to avoid your card fraud. Recently in there was a news, this is news of January 19 2020 22, sorry. So that says a teenager accidentally find a flaw that lets him hack dozens of Tesla car. So friends, you must be aware that with the Tesla's electronic vehicles, okay, the one of the world's very fascinating cars of electric vehicle cars by Elon Musk. So their teenager, a teenager hacks many of the cars. Okay, so there was a very shocking statement. Let's see one more shocking statement that says iPhone with iOS 15, Windows 10, Chrome hacked by Chinese hacker within minutes. Why such things are happening while we are considering these operating systems very secure? So just because of vulnerabilities in those softwares or in those programs. So what are those vulnerabilities? Vulnerabilities security term that refers to a flaw in a system that can leave it open to attack. It simply says there is, let's say, a flaw, or there was a loophole in your system. Okay, if there is a loophole in your system, uh, then enemies or enemy, those who got the idea of this loophole in your system, so they can enter through that loophole into your into your machine, or into your computer system, or into your electric vehicle. So that could be potentially very dangerous thing, that if somebody can control your electric vehicle, and that person though that who hacked the electric vehicle was able to open the gate and start the car and do some couple of operations. So it's really dangerous. Okay, so there should not be any vulnerability in our systems. Okay, so the vulnerability is the composition of three elements: a flaw in a system, access of attack flow. Okay, so these are the term, just to get the basic idea what is the vulnerability is. And just to avoid that vulnerability, we should keep on updating our system or our apps with the patches which a company keep on release periodically. Okay, so there is a classification of vulnerabilities. So vulnerability could be in the hardware, it could be in software, it could be in network, it could be personal. Okay, it could be by personal vulnerability is something. I also mentioned one thing, when we talk of social media, especially, that comes a social engineering. What is social engineering? When we talk of social media, it comes social engineering. Social engineering is the concept by which uh,
I mean, without not much technical knowledge, I can guess the password of your system without much technical knowledge. What is that? Okay, just by simple analysis, or most of us, we keep passwords like the name of our kids. Okay, mostly the name of our kids are there in our password, and in numbers we use our car number, date of birth, okay, or such numbers frequently to make a password. Or in fact, many people use very very basic password like admin123, admin@123. Okay, in fact, in many websites, this is the admin password. When we develop some website from a professional, they develop the website and they provide a basic password which is admin@123, and people even don't change that. So if you randomly keep on trying at least 10 websites per day with this admin password, I believe you will be able to crack at least one website, because people don't change password. Okay, and they put password like very simple password: a admin, a capital D MIN @123 or 1234. That's very simple. You can very easily guess them. And it's, let's say, if you have 4 to 5 accounts, if you can guess one password, the same password will be there in 4 to 5 other websites or other accounts which you are using, because it becomes very difficult to remember the password. So what we do generally, we keep a same password for all the, let's say, it's a banking website, or whether it's email accounts. So it becomes very easy for someone to guess them. So it becomes, we call them social engineering. With the help of social engineering, if I know much about you, I can try to predict the password, I can guess the password. So that's very very, so don't do like that. We should keep strong password. Okay, so thankfully the websites today, they won't allow you to keep the weak password. So they ask you to keep a strong password that have lowercase, uppercase, alphanumeric characters, and there is a minimum length restriction. And the banking website, after a specific period of time, compulsorily ask you to change the password. So that's very essential. That's very essential to keep your account secure. So what are the causes of vulnerabilities, which we have discussed? So if we are using unencrypted channels, well, as we are not using HTTPS, okay, it means the data is not encrypted. So this may lead to some sort of vulnerabilities, missing patches, as we have discussed the case of ransomware, WannaCry. Okay, people didn't install the patches, they got attacked by ransomware, they have to transfer the money using Bitcoin. Okay, in 2017 only, and this is 2022. It was a 5 year back situation, and that's why many people these days are talk about Bitcoin, and they are specifically concerned over such sort of users of Bitcoin. And the weak password is a specific case of vulnerabilities. Okay, so bugs are the system defects in the software codes. Okay, and there are softwares which are already infected with virus, they may cause vulnerabilities. And missing authorization, these are some of the causes of vulnerabilities into a system. So we should not keep vulnerabilities in our system, because this may lead to potential attacks. Interestingly, many people believe that hackers are always bad. This is not the situation. Hackers are not always bad. So here I just mentioned about 3 sort of hackers: white hat, black, and gray hat. So white hat hackers are the good hackers. We also call them ethical hackers. What they do, they will scan your system, and they will analyze your system, identify the vulnerabilities, and report you that you should keep these vulnerabilities updated. Okay, while the black hat hackers are the hackers, we are having personal goals, they want to steal some information or some money from you. So they are known as black hat hackers. So we can say they are the bad hackers. And gray hat hackers is, it's a category in between white and black. So these are some more terms. Ethical hackers are the good hackers, and in fact, companies used to hire ethical hackers these days to, if say they have developed a system or operating system, then they ask the ethical hackers to come and explore their system to find vulnerabilities into their system. Okay, so these are the ethical hackers. So how to protect your computerized information? So very very important part of we have seen so many issues so far.
So what is cybersecurity? What are the potential causes of this? What are vulnerabilities? What are the different sort and kind of viruses, worms, ransomware, spywares? Okay, we have seen all these things. So what could be the best internet browsing practices? So one thing is the secure internet connection. So your connection must be secure using HTTPS, and especially when you are using Wi-Fi. Again, when you are setting up your Wi-Fi router, or then you must have some WPA. This is the technical term, that you set up a key over there that nobody can access your Wi-Fi without your password. Okay, so we should use the encryption. We should not keep the Wi-Fi open, because if this will remain open, anybody can use your Wi-Fi connection. Okay, and they may do some bad activity with that. You should have a secure password, so don't use your surname, locality, date of birth, etc., your kid's name, spouse name, okay, or for the password. So this is one of the good idea. And don't be trapped in phishing attack. Okay, you need to be very aware. Okay, what is required in today's what is awareness is required. Okay, that's very required. If you're getting some emails or SMS which looks suspicious to you, do not click on to their links. Okay, and they may come like lottery also. Many times they comes like, you have won a of this much prize, want to claim your reward, you need to click onto this link, and you when you just click onto the link, and again you got trapped. So that's very, again, check for HTTPS. We discussed best internet surfing practices. That's a very important aspect. Best internet surfing practice, that don't surf website viruses or spywares comes from. There is a survey that says most of the adult site contains spywares, and most of the spywares or the malwares, they are coming from such adult sites, or sites which offers you free music or free videos, free games. Okay, because everybody wants free things from internet. So while surfing onto such website, we got honey trapped, and we got some spywares on all these things. So I mean to say, there is nothing free in this world. So want to use some service, we have to pay for that, so to be secure. Okay, and the browser privacy setting. So browsers, there should be some private browsing practices. There is an incognito mode as well, you should use that. Or if you are doing browsing in some browser, make sure that browser is not storing your passwords and the browsing detail. You must clear the cache on the cookies, or the browser, so that nobody will be able to know later on that what you serve onto that browser. So these are some of the best internet browsing practices which can keep you secure from all such attacks. And how to remain protected, one more important aspect. So we must use trusted softwares. Okay, as we have discussed earlier, stop using pirated software. If you are not able to pay, for example, as a student, so what we can use open source softwares. Okay, we can, they are free and very well trusted softwares. You must use a firewall. If you are working in an organization, to secure your network you must use or configure either software, or if it's a bigger, use hardware firewalls. Okay, licensed antivirus and anti-spyware softwares. If we have some, because many times we thought, why should we buy antivirus, we should keep a free antivirus, but the free won't work. So if you're using that, we must use a licensed antivirus, and we have to keep it up to date. If we want to update the antivirus, it won't be able to access the data of new viruses coming into the internet world. So we need to keep the antivirus also updated. And there are some other intrusion detection and prevention systems. They are the high-end systems available. They can track the suspicious activity, and they'll update you time to time. But in the summary of this session, what we can say is you are the best defense. What does it mean? It says the technology is only a small part of cyber defense. You and only you are the most important person. Protect yourself, because what does it say? It says our browsing practice, our habits, our awareness only can keep us safe from cyber attacks. Okay, so that's a very important thing that we Sir, we are not able to hear your voice.
If you are muted, then please unmute. Hello. Anurag sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it audible now? It's okay now. Okay. So the summary, as a summary of this presentation, what I can say is you are the best defense. Technology is only a small part of cybersecurity or cyber defense. You and only you are the most important person. So protect yourself. It means just by the cyber, by awareness or by basic knowledge, we can keep ourselves safe, our system safe. Okay. So what is required in today's world is the cyber security aware employee. So we should keep on organizing such workshops to train our staff, our faculty, or employees that they should be aware about the cyber security, because you are the only important person. That's the summary of this presentation. So by using the safeguard practices and by having the basic awareness of cyber security, we can protect our essential data, our privacy in this today's world. So with this, I'll say I'll always be aware and always be on your guard. So with this word, I just would like to Thank you very much, Anurag sir, for such a wonderful presentation. Now I would like to call upon Mamta Chaudhary ma'am to please sum up this session. Mamta Chaudhary ji, please. Thank you, sir. Thank you, Engineer Anurag Jagatia. Your session is very interesting and useful for us. You explained that the cyber attacks are not only affect individual, but can also affect any organization or a country. That is a major issue. So we have to be very aware about the cyber security, and we should use internet resources very wisely. In a very simple manner, you explained the all types of cyber attacks, and you cleared some important topics like ransomware, worms, Trojan horses, and keyloggers. On the behalf of Government Polytechnic College Barmer, I am thanking you for giving your precious time to us. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So now I would like to call upon Sanjay Sharma sir for introduction of mine. So Anurag sir, if you want to stay, please, you are most welcome. But due to busy schedule, if you want to leave, it's up to you, sir. But we want you to be there. Prashant sir, am I audible? Yes, sir. Good to go. Visible? Okay, thank you, sir. Good afternoon, friends. पोस्ट लंच सेशन में दूसरा जो सेशन है वो हमारे प्रशांत सर लेंगे, और प्रशांत सर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद जितने भी वेबिनार्स हुए हैं उसमें इन्होंने अपनी भूमिका बहुत जबरदस्त तरीके से दी है, और आप ज्यादातर लोग इनके बारे में जानते होंगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रशांत सर के साथ काम कर रहा हूं पिछले 3 साल से। तो प्रशांत सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फॉर्मली मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। तो जो प्रशांत सर हैं वो अभी प्रेजेंटली जीपीसी बाड़मेर में लेक्चरर हैं कंप्यूटर साइंस के, और लगभग 3 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं। और जैसा कि इनके नाम में ही आपने देखा प्रशांत जोशी, तो जब भी हम सवाल पूछते हैं हाउ इज द जोश, तो ये हमेशा कहते हैं वेरी हाई सर। तो नाम में ही वो जोश है, जो भी काम इनको दिया जाता है बहुत डेडिकेशन के साथ। जैसे कि पिछले ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके अगर आप इसका थोड़ा सा भी अगर बैकग्राउंड समझें तो मैं देख रहा हूं कि पिछले 10-12 दिन से, इनफैक्ट 1 महीने से ही इस काम के प्रति ये इतने
डेडिकेटेड हैं, सवेरे शाम लगे रहते हैं, इनकी टीम का भी योगदान है, बट इनका डेडिकेशन वाकई काबिले तारीफ है। निटर चंडीगढ़ से आपने एमटेक करी है कंप्यूटर साइंस में। उससे पहले हालांकि ये चूंकि बीकानेर को बिलोंग करते हैं तो वहीं से इन्होंने अपना डिप्लोमा किया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर से और मरुद्रा इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से। 14 साल से ये लगभग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी के रूप में, और इन्होंने कई विषयों पर अपने पेपर्स पब्लिश किए, जिनमें से एक है प्रिसाइज पॉइंट पोजीशनिंग। इसके अलावा ये आज तक 83 वेबिनार्स और सेमिनार्स स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के करवा चुके हैं, जिसमें बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटीज लाइक MP पूनिया सर, HD चारण साहब जो कि VC हैं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उनके साथ इन्होंने बहुत काम किया है। इनके पसंदीदा जो विषय हैं वो है GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, विंडोज प्रोग्रामिंग और साइबर सिक्योरिटी पे भी इनका अच्छा खासा दखल है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस विषय पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और लोगों को अक्सर ये मतलब अवेयर करने का प्रयास करते हैं कि आप जो भी इंटरनेट बैंकिंग या इस तरह की ट्रांजैक्शंस वगैरह जो भी करते हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, तो कैसे आपको अवेयर रह के अपनी भी सुरक्षा करनी है और दूसरों की भी सुरक्षा करनी है। उस कारण में हमें ये अक्सर ये बताते रहते हैं। एल्यूमनी सोसाइटी जो GPC बीकानेर की, उसके फाउंडर हैं, सेक्रेटरी हैं, और आपके द्वारा जो एक अभी हाल ही में इन्होंने एक किताब लिखी है, AICTE ने इनसे लिखवाई थी, इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम, जिसका कि 8 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि राजस्थान के कुछ लोगों को AICTE ने जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे किताब लिखी है उसका 8 भाषाओं में अनुवादन करवाया गया है। और अभी ये जो सेशन लेंगे कुछ पेरेंटल कंट्रोल, सेफ्टी फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पर लेंगे, और मैं वेलकम करता हूं प्रशांत जोशी सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू संजय सर, वैलिडिक्टिव वाला पूरा सेशन हो गया था ये तो ठीक है, आपकी भावनाएं हैं उसकी मैं एकदम सम्मान करता हूं उसका। बाकी हम शुरू करते हैं। मेन जो आज का सेशन है, बहुत ज्यादा लंबा सेशन मैं नहीं लूंगा इसको, क्योंकि ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, केवल 8 मिनट बाकी है। तो सबसे पहले पेरेंटल कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी जानना कि हमें ये पेरेंटल कंट्रोल की जरूरत ही क्यों हुई। जितने भी एक्सपर्ट्स थे, ऑल एक्सपर्ट्स आर, सभी ने एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि भाई इंफॉर्मेशन ब्रीच है, उसको रोका नहीं जा सकता। एलन मस्क हो, चाहे थोड़े दिन पहले अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का भी अगर हैंडल है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, बिल गेट्स का कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो हम तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी है उसको करना बहुत जरूरी है। अब ये जो सिक्योरिटी है, जब इतने बड़े लोगों का ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट है, वो अगर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो हम तो केवल अपना और अपने परिवार को सबसे पहले सुरक्षित करें, क्योंकि यदि हम कैपेबल हो पाएंगे तभी क्या है कि आगे समाज भी कैपेबल होगा, आगे हम इंस्टीट्यूट को, उसके बच्चों को, और आगे इसी लेवल में बढ़ते हुए हम अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने स्टेट को, सभी को हम सेव कर पाएंगे। और डिजिटल जो सेफ इकोसिस्टम ऑफ इंडिया का और वर्ल्ड ऑर्डर की भी हम तभी बात संभव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें खुद को सेफ होना है, हमारे जो किड्स हैं उनको सेव करना है, और उसी की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसमें मेन बात यही है कि जो सॉफ्टवेयर के जो मीन्स हैं वो मीन्स क्या क्या हैं। तो उसमें से कुछ 2-3 जो यूटिलिटी है उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करूंगा, ज्यादा उसमें मैं डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। तो उसमें जो पेरेंटल कंट्रोल बेसिकली क्या है, पेरेंट के द्वारा कंट्रोल है अपने किड्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो हम बेसिकली टेक्नोलॉजी है वो हमारी क्या है, मददगार है, हमारी क्या है कि सहायक है। तो सॉफ्टवेयर कैसे मीन्स क्या क्या है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज है कि जो रूल है, हम अपने बच्चों को यदि हार्डवेयर से या डिवाइस से दूर भी रख दें तो भी हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम एक मतलब हिटलर माँ बाप नहीं हो सकते कि बच्चों को ये कह दें कि अब आपको ये गैजेट्स काम में लेना ही नहीं है। उसको अपने स्कूल में भी जाना है, वहां पर सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास में भी मोबाइल गैजेट सब होने हैं, और अब तो टीचिंग भी जो है वो ऑनलाइन ही हो रही है, तो किसी भी रूप में हम उनको मना कर ही नहीं सकते हैं। तो उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं वो हमें पता होनी चाहिए, हमें डूज क्या है, डोंट्स क्या है वो हमें पता होना चाहिए, क्या हम अलाउ करें, क्या हम उसको डिसअलाउ करें। तो उसी बेसिस पर कुछ जो रूल्स हैं
जिसको बेसिकली हम कहते हैं फैमिली रूल्स। सबसे पहले हमें हमारा जो विद्यार्थी है, जिसे हम बेसिकली कहें हमारा जो बच्चा है, उस बच्चे को हमें सबसे पहले क्या है, अपने को भरोसे में लेना है कि हाँ हम ये तेरे भलाई के लिए कर रहे हैं। जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो बेसिकली किसके लिए, तेरी ही भलाई के लिए। तो सबसे पहले बच्चे को जो भरोसे में लेना है, तो ये जो बेसिक जो रूल्स होंगे, जिसे हम अपने जिसे कहते हैं फैमिली रूल्स, कि आपका जो बच्चा है उसको आपने कह दिया ये ट्यूशन का टाइम है, ये आपके खेलने का टाइम है, ये आपके वर्शिपिंग का टाइम है, ये आपका डिजिटल गैजेट्स को यूज करने का टाइम है। तो आप उसके लिए ये जो टाइम है कि आप गैजेट्स को इस परमिसिबल ड्यूरेशन में काम में लें। अब गैजेट्स को देना एक चीज हुई, अब उस गैजेट्स के अंदर वो क्या क्या देख रहा है। वो हो सकता है यूट्यूब देख रहा हो, और YouTube के अंदर हो सकता है वो वास्तव में एक पढ़ने का संबंधित, जो क्रिएटिव आर्ट से संबंधित या जो भी उस स्ट्रीम में उसको इंटरेस्ट है, जूडो कराटे सीख रहा है, तो वो भी हो सकता है उसका सीखने का इंटरेस्ट हो। तो वो वैलिड कंटेंट देख रहा है या नहीं देख रहा, उसके जो फिल्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, गजट इंपॉर्टेंट है जो काम में ले रहा है, और साथ में वो क्या देख रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी इन चीजों को हम बाय मींस ऑफ सॉफ्टवेयर कैसे इसको हम प्रोटेक्ट कर पाए हम हमारे बच्चे को। और बच्चे के बाद में ये तो हम बेसिकली पेरेंटल कंट्रोल और किड्स कंट्रोल को बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसी है जिस अवस्था में जैसे मैं हूं अभी, तो हमें अपने पेरेंट्स को भी सेव करना है। तो बेसिकली ये फैमिली सेफ्टी भी है। तो अगर आप टेक्निकली साउंड है तो आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनको भी सेव कर पाएंगे, और आप अपने जो किड्स हैं उनको भी सेव कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल एक फैमिली जो सेफ्टी है उसका बहुत बड़ा एक कंसर्न है, और यही रीजन है कि जो यूजीसी ने प्रख्याता करके गाइडलाइन निकाली है, और मैंडेटरीली हर स्कूल में पढ़ाई जा रही है। कॉलेज एजुकेशन में वो धीरे धीरे आएगी, लेकिन सबसे पहले जो सबसे सॉफ्ट टारगेट्स हैं, सबसे जिन्हें हम कंप्यूटर की भाषा में कहें वल्नरेबल कौन है, तो वल्नरेबल है हमारे किड्स। और इसी को देखते हुए सबसे पहले उन्हें सेव करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए पेरेंटल कंट्रोल से वो लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक है। लेकिन उसको बाय मींस ऑफ सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं उसके लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कुछ जो टॉपिक है, सबसे पहले मैंने डिस्कस किया व्हाई पेरेंटल कंट्रोल। तो पेरेंटल कंट्रोल जरूरी है, ये हम सबने समझा। दूसरी जो चीज है वो मैं अपने टॉक से बताना चाहता हूं, वो ये है कि पेरेंटल कंट्रोल में सबसे पहले हमें अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेना है। अदरवाइज वो दूसरे वेज एंड मीन्स निकाल लेगा आपको बाईपास करने का। और ये मान के चलिए कि आपका जो बच्चा है वो आपसे टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत होशियार है, और नहीं है तो वो अपने साथियों से ऐसे वेज और मीन्स ले आएगा कि जो आपके इन पेरेंटल कंट्रोल के भी कंट्रोल में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले फैमिली रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही जो रूल्स हैं उनको हमें सॉफ्टवेयर में लिखना है। लिखने का मतलब उनकी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है केवल। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे कि पेरेंटल कंट्रोल के बाद में माइक्रोसॉफ्ट है, उसने क्या दिया है। माइक्रोसॉफ्ट का मतलब मेरा अभी इससे मतलब है जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे मेरा अभिप्राय है। यानी देखिए आजकल की जब बात करें तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि प्री बंडल ऑपरेटिंग सिस्टम ही आ रहे हैं, अगर लैपटॉप्स भी लें या डेस्कटॉप्स भी लें। तो जब हम जिनाइन सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो उसकी जो फुल कैपेबिलिटी है उसको हमें काम में लेना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट की क्या फीचर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो वीडियो है मैं यूट्यूब से ही मैंने लिया है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट है उन्हीं का है, और उसमें कैसे कंट्रोल करते हैं उसका एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लेकिन बहुत यूजफुल है, इसको आप देखें। You can add and add and add and add and add and and you can give them access, limited or restricted. Kids, what they are browsing, what they are using. Sir, Settings after family other
प्रशांत जी, वॉइस नहीं आ रही है वीडियो में, और आ रही है कभी कभार तो इको आ रहा है साथ में। Yes, I'm trying. Just wait for a while. तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा, जहाँ पासवर्ड टीम का जो साउंड का सेटिंग है सर, उसमें जाके आप सिस्टम साउंड करिएगा सर। आई क्या? सो बेसिकली अभी यहाँ पर इसमें जो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें किस प्रकार से सेटिंग की जाती है उसी के बारे में है। अभी तक उन्होंने केवल पेरेंटल कंट्रोल विंडोज में कैसा होता है वीडियो में यही बताया है एक्सपर्ट ने। अभी इसमें कैसे सेटिंग है उसको हम देख रहे हैं वन बाय वन। तो जो फैमिली एंड अदर पीपल जो ऑप्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऐड ए फैमिली जो मेंबर है उस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर जो हमें जैसे चाइल्ड है ये उसी प्रकार से है कि हम अपने मल्टीपल जो अकाउंट है उसमें जो लॉगिन बना रहे हैं, लेकिन एज ए चाइल्ड हमें अकाउंट बनाना है इसलिए हमें ऐड ए चाइल्ड पे क्लिक करना है। और क्योंकि उसका एक ईमेल भी होगा जिससे उसको लॉगिन करना है ताकि बाद में उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी ट्रैक की जा सके, उसका एड्रेस क्या होगा या और भी उससे संबंधित जो चीजें हैं वो डिवाइसेस भी क्योंकि उसके अलग हो सकती है। तो सबसे पहले उसका जो एक माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक का अकाउंट है और अदरवाइज ये दूसरा भी इसमें कई बार ये वैलिड है, ऐसा नहीं है कि केवल outlook.com ही एक्सटेंशन हो। एक दूसरा जो मेल अकाउंट है उससे वैलिडेट उसको करना है बेसिकली। और उसके बाद बेसिक डिटेल डालने के बाद में उसका बर्थ मंथ डे और ईयर यानी उसकी जो डीओबी है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उस डीओबी के ऊपर बहुत से जो चेक्स हैं वो रहते हैं कि भाई उसको कौन सी एज के अकॉर्डिंग उसको क्या है कि कंटेंट दिखाया जाएगा ऑनलाइन। तो इसी को हम आगे चलते हैं। ऐड किया, ऐड करने के बाद में क्या है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो हमारे पास में क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक हमारा विंडोज 10 है उसमें नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ एक फैमिली मेंबर ऐड हो रहा है। फिर उसका कंफर्मेशन होगा, उस आईडी पे जाना होगा और वहां पे जाके हमें कंफर्म करना होगा। और फाइनली ये इस प्रकार से जाकर के आगे एक नया मेंबर जो है दूसरा अकाउंट है हमारा जो ये ऑनलाइन अकाउंट होगा उसमें एक और फैमिली मेंबर वो ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कौन कौन सी लगा सकते हैं, ये बहुत सी तरह की हमारी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं तो वो अभी ये यहाँ पर है जो एज की हमने बात की थी कि कौन सी उसकी एज है, उस एज के अकॉर्डिंग जो रेस्ट्रिक्शंस है उस पर इम्पोज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो हम जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं तो उस एज के लिए जो सेफ हैं और वो भी एक तरह से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, हो सकता है कि यहाँ पर सिविलाइजेशन के हिसाब से या हमारे लिए कुछ चीजें हैं वो ऑप्शन हो लेकिन फॉरेन कंट्रीज में वो उनको क्या वैलिड मानते हो। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो परमिशेबल जो कंटेंट है वो उसको दिखाया जाएगा। और उसमें भी कंटेंट में वीडियो भी हो सकता है और जैसे एप्स भी हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है, जो कैटेगरी वाइज है वो भी सारी चीज है वो जो हमारा जो चाइल्ड है उसको परमिसिबल होगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर बेसिकली ये सारा टास्क हो रहा है अभी तक। अब इसमें भी ब्लॉक जो एप्स है और गेम्स हैं हम चाहें तो उनको ब्लॉक कर सकते हैं, हम चाहें उनको अलाउ कर सकते हैं। और वेलबींग का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज द स्क्रीन टाइम। हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर डे में वो इतना ही समय तक वो क्या है कि गैजेट्स के सामने रहे फिर ना रहे, और उसमें भी कौन से डे में रहेगा और उस पर्टिकुलर डे के अंदर जिसे हम टाइम टेबल कहें कि उसको कब अलाउ करें कब को हम डिनाई करें।
तो वो जो दोनों रूल है वो उसके हिसाब से क्या है, जो ब्लू वन तो दिखाई दे रहे हैं वो अलाउड टाइम है, और व्हाइट वाला जो टाइम है, ग्रे वाला जो टाइम है वो हमारा बेसिकली उसको नॉट परमिशन वाला जो टाइम है। तो इंडिविजुअल डे वाइज सारे कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं कि कौन से, अब जैसे यहाँ पर सामने संडे को 12:30 बजे से ये जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है सेट कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपर्ट, तो उसी के बीच का ये जो टाइम है उसको एक तरह से क्या किया, अलाउ कर दिया उसको। तो संडे टाइम लिमिट्स हो गया। अब संडे को टाइम ब्लू है वो ज्यादा है, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको अलाउ किया है, हॉलीडे है, उन्होंने जो भी सोचा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, मंडे के लिए 30 मिनट। तो बेसिकली ये जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, कौन सा पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हम उसको अलाउ कर रहे हैं या डिस अलाउ कर रहे हैं। तो ये सारी सेटिंग ठीक की है। आगे चलते हैं हम थोड़ा और। तो मेनली ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेस में, इसमें अदरवाइज क्या होता है कि अगर हमने जैसे हमारा, क्योंकि गजेट जो है हमारा ही जैसे मोबाइल है या हमारा ही जो लैपटॉप है उन्हीं को बच्चे काम में लेते हैं, तो वो उस ड्यूरेशन के अलावा यदि वो काम में लेंगे, फिजिकल एक्सेस उनको मिलता भी है, तो वहां पर विंडोज है, वहां पर एक मैसेज आ जाएगा उनको कि भाई आपके पेरेंट ने आपको अलाउ नहीं किया है, उनसे परमिशन ले। तो ये एक बहुत सी मतलब कि हमें एक तरह से राइट मिलता है थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर वे से कि हम उनको किड्स को कैसे कंट्रोल कर लें। अब इसी प्रकार से ये माइक्रोसॉफ्ट का ये वीडियोस मैं शेयर कर दूंगा, जो माइक्रोसॉफ्ट खुद क्या कह रहा है उसके बारे में है। वीडियो नहीं चल रहा है इसलिए हम इसको भी स्किप कर देते हैं। अब उससे इंपॉर्टेंट एक और महत्वपूर्ण जो चीज है वो है गूगल प्ले स्टोर के अंदर पेरेंटल कंट्रोल क्या है। तो ये भी वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार थोड़ा देखते हैं। जितना भी ये इसमें इन्फोग्राफिक्स होगा, ऑडियो हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे, लेकिन इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल वीडियो। बेसिकली जितने भी ऐप हैं ये, क्योंकि मोबाइल पर भी जो किड है उसको है, अब वो गूगल प्ले स्टोर के अंदर क्या डाउनलोड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर यूजर को क्या क्या राइट्स है उनको सेट करना इसमें बताया जाएगा। तो प्ले, हमारा जो गूगल प्ले है उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं परमिशंस। इन्फोग्राफिक्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यहाँ पे हालांकि। तो यहाँ पर एक पिन है वो बनानी होगी, और उसी पिन से हमें जो स्टूडेंट, हमारा जो किड है या हमारा जो चाइल्ड है उसको क्या देना पड़ेगा। और अब हर जो कैटेगरी थी यहाँ पर, ये जी कैटेगरी, पीजी कैटेगरी, तो वो कैटेगरी सेट की गई है ताकि उसको वो ही कंटेंट वहां दिखाया जाएगा। अदरवाइज क्या है कि नॉर्मली जैसे किड है, हमने नॉर्मल सेटिंग एक्चुअल में कोई करता ही नहीं है। मेरी आवाज नहीं है? Prashant sir, only black screen is visible. ओके ओके। कोई बात नहीं, ये लिंक मैं आपको एक बार शेयर कर दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो थिंग है अपनी है गूगल फैमिली लिंक। तो गूगल फैमिली लिंक, एक मिनट, ये भी शेयर नहीं है ना, जस्ट अ मिनट। Yeah, it's okay now. तो इसमें बेसिक लर्निंग जो हमें है या एज ए पेरेंट हमें ध्यान में रखना है कि यदि हम, हमारे जो बच्चा है उसको यदि हम मोबाइल दे रहे हैं, तो ये बेसिक जो सेटिंग्स है जो प्रोवाइडेड है वो भी हम लोगों को मालूम नहीं है। और अगर वो नहीं मालूम है तो वो एक तरह से वल्नरेबल कंडीशन हम उसको कहेंगे कि हमने बच्चे को एक ऐसे स्पेस पे हमने छोड़ दिया है जहां पर कोई भी आकर के उसको कुछ भी दिखा सकता है या कोई भी ऐड दिखा सकता है। तो वो आपके ही एक तरह से वॉलेट पर भी हो सकता है कि भारी पड़ जाए।
ऐसा बहुत से केसेस हैं, वो आए दिन हैं, वो अखबारों में हम सुनते हैं कि नाना जी दादाजी के अकाउंट से इतने पैसे चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनके जो बच्चा है उसको कोई गेम खेल रहा था, उसके लिए कोई कॉइन्स खरीदने थे वगैरह वगैरह, बहुत से रीजन से। तो ये हमें इसलिए बेसिक जो कंटेंट है उसको क्या परमिशन देनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में गूगल का ही फैमिली लिंक करके जो ऐप है, तो उसमें भी जैसे अभी तक हमने वो बात की वो थी विंडोज की, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर हम क्या फैसिलिटीज है वो मिलती है। तो जिनको हम चाहें, ये मल्टीपल हमें लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक भी टेक जाइंट है उसकी जो हम गूगल ये पेरेंटिंग जो कंट्रोल है उनको अगर सीख लें और उनको लगा लें तो उससे बहुत सी चीजें वो कंट्रोल इजीली की जा सकती है। अब गूगल है वो भी अपने आप में बड़ा जाइंट है, और मल्टीपल डिवाइसेस में अलग अलग टाइम में हम हमारे बच्चे हैं वो रहते हैं। तो इसके कई जो फीचर्स हैं उनको हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं कि भाई अभी पर्टिकुलर हमारे फैमिली मेंबर है वो कहाँ है, उनकी लोकेशन क्या है। कुछ फीचर्स हैं वो प्रीमियम है और कुछ जो फ्रीली अवेलेबल हैं। तो फ्रीली अवेलेबल में बेसिकली ये भी है कि हम कम से कम क्या है कि जितने भी हैं उनके जो एप्स हैं, जैसे ये मान लें कि पर्टिकुलर ये व्हाट्सएप है उसको ब्लॉक करना है चाइल्ड को, तो हम अगर डिसेबल कर देंगे तो उसके मोबाइल में वो दिखेगा ही नहीं। ये बहुत ही बड़ा फीचर है। हमने कहा यूट्यूब है, वो यूट्यूब उसको नहीं दिखे, तो उस केस में उसको यूट्यूब का जो ऐप है वही उसके मोबाइल से कंट्रोल हो जाएगा, उसको दिखेगा ही नहीं। एक तो होता है डिसेबल, दूसरा वो उसमें आएगा ही नहीं। तो वो सारा का सारा है। पेरेंट्स अगर आप उसके एज ए, जैसे आपने पिन हमने जनरेट की, उस पिन के अंदर अगर आपने आपने आपके पास ऑथेंटिसिटी है और आपने अपने जो बच्चों के जो अकाउंट बनाए हैं वो एज ए गूगल फैमिली लिंक के थ्रू उनको एज ए चाइल्ड उसमें ऐड कर रखा है, मेंबर के रूप में ऐड कर रखा है, तो उस बाद में आप जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का मोबाइल एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा एक थर्ड पार्टी जो ऐप है क्विक हील है, हालांकि इसका कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन उसमें ये ग्राफिकली हम इंडिविजुअली कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक बार, मेरी दूसरी मशीन है उस पर एक बार स्विच होता हूँ, उस पर लाइसेंस मेरे पास वर्जन है, प्लीज होल्ड ऑन। तो अभी ये मेरा कंप्लीट स्क्रीन है, आपको इट माइट बी यू आर एबल टू सी दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये बेसिकली यहाँ बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि ये जो फीचर है जो कि हमारे पर्टिकुलर ये क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी है, क्योंकि ये इंडियन बेस्ड कंपनी है तो हम थोड़ा बहुत बाकी कंपनी से इसको रिलाई कर सकते हैं। और जो फीचर हमारा क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी दे रहा है, यदि आप कोई भी दूसरा एंटीवायरस भी अगर काम में ले रहे हैं जिसमें पेरेंटल कंट्रोल है, तो लगभग वो सारी की सारी फैसिलिटीज हैं उसमें भी अवेलेबल रहेगी। तो हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो पहले इसको खोलने के पर भी ये सिस्टम की सेटिंग्स को, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स हैं उसको चेंज करेगा, इसलिए मेरे पास में डायलॉग बॉक्स आया है, हो सकता है ऑनलाइन आपको नहीं दिख पा रहा हो अभी। तो मैं इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए जो पासवर्ड मांग रहा है वो मैं इसको एंटर कर दिया है। अब ठीक उसके बाद में एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन के ऊपर भी पासवर्ड है, उसको भी मैं दे देता हूं, क्योंकि अगर हमने इसको ही ओपन रख दिया तो कोई भी आके सेटिंग्स है उनको चेंज कर देगा। तो अब यहाँ पर ये पेरेंटल कंट्रोल है वो आपके सामने विंडो आ गई है। तो सबसे पहले डिस्प्ले अलर्ट मैसेज इसको ऑन किया है, सेलेक्ट होम टू अप्लाई द सेटिंग्स, यानी आपने विंडोज में भी यूजर्स अगर बना रखे हैं उनमें कौन कौन से यूजर के लिए ये पेरेंटल कंट्रोल इनेबल करना है। माइक्रोसॉफ्ट की रूप में ऑनलाइन अकाउंट आपके पास में नहीं है, वहां पर नहीं बनाया है, लेकिन आपने केवल क्विक हील टोटल सिक्योरिटी है जो कि महज लगभग 1500-1600 रुपए में भी आपको सिक्योरिटी और ऐसे फीचर्स अगर मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब इन फीचर्स को एक बार देख लेते हैं कि अप्लाई टू ऑल यूजर्स, सभी यूजर्स को ये फीचर देना है या नहीं देना है। तो उसको सेलेक्ट करना है। मान लो सभी के लिए पेरेंटल कंट्रोल एक बार लगा दिया है हमने, यहाँ पे जाकर के अब हमने इसको ऑल यूजर पे हमने कॉन्फ़िगर कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर जो हमारे पास में फीचर आया है वो बेसिकली है इंटरनेट ब्राउजिंग पर क्या कंट्रोल करना है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इंटरनेट ब्राउजिंग सर्फिंग है उसी में बहुत ज्यादा टाइम है वो लगता है। तो अगर उसको कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे करना है।
अब रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जब वेबसाइट बनती है तो उसको कैटेगरी है, उसको बताना पड़ता है कि भाई ये गेम से रिलेटेड गेमिंग वेबसाइट है, या क्या ये न्यूज पेपर से रिलेटेड है, मीडिया हाउस की वेबसाइट है, या उसकी कैटेगरी कौन सी है, स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है। तो वो जो कैटेगरी वाइज है, हम इस लेवल पे अगर हम रेस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं तो वो रेस्ट्रिक्शन करने के लिए यहाँ पर ये फीचर है यहाँ पर। और इसमें भी उन वेबसाइट के लिए भी क्या है कि जब से क्या जीडीपीआर एक्ट है वो यूरोपियन कंट्रीज में इम्पोज्ड हुआ है, तब से वहां पर क्या है कि पर्टिकुलरली एज स्पेसिफिक हर कंटेंट को कैटेगराइज किया जा रहा है। अब यूट्यूब की भी जैसे नई पॉलिसीज है तो उसमें भी वो पूछता है हर वीडियो में कि क्या ये किड्स के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो यूरोपियन जो नॉर्म्स हैं उनसे एक तरह से पूरा वर्ल्ड है अभी एक तरह से प्रभावित है, क्योंकि वही रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब जगह एक तरह से उनको बाद में चाहे कंट्रीज अडॉप्ट करें थोड़ा बहुत मॉडिफाई कस्टमाइज करके, लेकिन लगभग कंट्रोलिंग वहीं से हो रही है। तो ये जो अंडर 5 कैटेगरीज के जो भी हैं, और तो ये कैटेगरी एज की सिलेक्ट करना वो भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे की उम्र क्या है, उस पर्टिकुलर उम्र के लिए उसके लिए क्या सुटेबल थिंग्स हैं, तो वो सिलेक्ट करने के लिए ये एज के कुछ कंट्रोल्स हैं। अब उसमें एडल्ट कंटेंट उसको अलाउ करना है, डिनाई करना है, तो उसके ये टॉगल स्विचेज हैं इजीली, बिजनेस की वेबसाइट देख सके, चैट देख सके या नहीं देख सके, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी को अलाउ करना है नहीं, यानी ये जो कैटेगरीज है बेसिकली, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको हम यहाँ पर अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी होती है, जैसे मान लो अगर मैंने ही कोई वेबसाइट बनाई है इंडियन होस्टिंग पे अगर किया है, एक नॉन जो स्टैंडर्ड जिसे हम कहें कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया और कैटेगरी नहीं बताई है, तो उस केस में क्या करें। और ऐसी बहुत सी वेबसाइट होती है और जो मेलाफाइड इंटेंशन से होती है वो हो सकता है रिपोर्टिंग भी गलत करे। तो ऐसे केस में आपको पता है कि बच्चे को ये पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं देनी, तो वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए भी यहाँ पर अलग से फीचर होता है, तो वो एक्सक्लूड करके हम वो अलग से स्पेसिफिकली क्या है कि कैटेगरी या लिस्ट ऑफ जो वेबसाइट्स है उसको हम दे सकते हैं कि भाई इसको अलाउ करना है, इसको नहीं अलाउ करना है। तो ये कैटेगरी बेस्ड जो सिलेक्शन था, एक ये चीज है इसमें। और उसी के साथ में पर्टिकुलर वेबसाइट का जो हमने कहा कि एक्सेस करना, पर्टिकुलर ब्लॉक की लिस्ट, वो अलाउड की लिस्ट थी कि इन वेबसाइट को छोड़ करके, एक्सक्लूड करके, और ये है ब्लॉक लिस्ट कि इन पर्टिकुलर वेबसाइट को तो ब्लॉक करना है, हम नहीं चाहते हैं कि वो दिखे। ठीक है, तो वो जो सेटिंग्स है वो लिस्ट ऑफ वेबसाइट टू बी ब्लॉक, तो 1 बाय 1 करके उनको एंटर किया जा सकता है उनके यूआरएल्स को, और एक लिस्ट है वो मेंटेन की जा सकती है। उसी के बाद में इंटरनेट के एक्सेस के ये 3 प्रकार थे, उसमें थर्ड जो टाइप है वो शेड्यूल इंटरनेट कब कब देखे कब कब नहीं देखे, जो हमने जो पहले एक वीडियो देखा था उसमें भी हमने चेक किया था। तो वही चीज है यहाँ पर, वो पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर कब कब उसको अलाउ करना है, कब कब उसको डिसअलाउ करना है। इसी प्रकार के इंटरनेट एज पर द शेड्यूल, शेड्यूल दे दिया संडे को, मंडे को, और इंटरनेट कब देखना है, तो बेसिकली ये सारा सेटिंग उसी के लिए है, अलाउ करना, डिसअलाउ करना और इंटरनेट की सेटिंग। इसी प्रकार से हम पर्टिकुलर हमारे इंटरनेट के अलावा हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो एप्लीकेशंस हैं उन्हीं को ही काम में ले या इनको नहीं काम में ले। तो एप्लीकेशन लेयर पर जो कंट्रोल है, एप्लीकेशंस जो बेसिकली हैं कि विंडोज को एमएस ऑफिस है उसको तो देख पाए वो, लेकिन वो क्या है कि कोई गेम नहीं देख पाए या गेम प्ले नहीं कर पाए, तो गेम की बेसिकली कोई ईएक्सी होगी, कोई ना कोई गेम होगा उसका, तो उसका ईएक्सी का अगर पाथ दे दिया तो वो पर्टिकुलर गेम वो नहीं देख पाएगा, या पर्टिकुलर को अलाउ करना। तो वो दोनों चीज है, रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन। उसमें ये डिटेल्ड में बहुत सी सीडी डीवीडी से रिलेटेड जो एप्लीकेशन चलती है कि जिसमें कई गेम्स ऐसे होते हैं जो लाइव सीडीज उनकी रहती है तभी वो गेम चल पाएंगे या उनके अच्छे ग्राफिक्स आ पाएंगे। तो ऐसी एप्लीकेशन को अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है, डिनाई करना है तो डिनाई कर सकते हैं ऐसे। चैट एप्लीकेशन को क्या करना है, क्या हमें जो हमारा बच्चा है या जो कोई, इवन मैं तो कहूंगा कोई भी मेंबर है वो, तो उनको अलाउ करना है या नहीं करना है, डाउनलोडिंग के लिए अलाउ करना है या नहीं करना है, ईमेल को क्या उनको फैसिलिटी देनी है या नहीं देनी है, अगर उनका टास्क ही नहीं है। भाई अगर चाइल्ड कंट्रोल की बात करें पर्टिकुलर, तो उस कंडीशन में उनको ईमेल अगर नहीं काम में आ रहा है तो डिनाई भी किया जा सकता है, एज की कैटेगरी, वर्क के हिसाब से, एग्जाम टाइम है, अभी कोई ईमेल नहीं, तो जो भी रूल बनाए तो उस रूल को यहाँ पर सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में करने का एक बेसिकली ये तरीका है। फाइल शेयरिंग अलाउ करना है या नहीं, गेम्स अलाउ करने हैं नहीं, तो ये बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो कैटेगरीज हैं एक्सक्लूजन की कि इनको छोड़ करके, तो वो सारी चीज यहाँ पर है। और इसी प्रकार से जो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है उसका एक्सेस करना है तो ब्लॉक लिस्ट, जैसे कि पहले भी आया था इंटरनेट के लिए
ये एप्लीकेशन के लिए ब्लॉक लिस्ट है कि ये एप्लीकेशंस काम में लेनी ही नहीं है, जो हो सकता है ऊपर की कैटेगरी में कवर ना हुई हो। तो स्पेसिफिकली EXE को फैच करके डायरेक्टली जैसे ये एप्लीकेशन पाथ आ रहा है ऐड किया, और जो भी EXE है हमारी जहां पर भी, क्योंकि हमारे मशीन पर ही वो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो उसका पाथ भी हमें पता होगा, उसका पाथ केवल देना है, वो EXE फिर नहीं चलेगी। इसी प्रकार से आगे पीसी का एक्सेस कंट्रोल, पीसी को ही क्या अलाउ करना है या नहीं करना है, पूरा का पूरा पीसी, इंटरनेट को किया, एप्लीकेशन को किया, उससे भी बड़ा लेवल आ गया कि इस ड्यूरेशन में कंप्यूटर को क्या कोई लॉगिन भी कर पाए या नहीं कर पाए। तो वो जो एक्सेस और डिनाइल है उनकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है, वो जो पहले हमने देखी थी लगभग उसी तरह से है। मेनली यहाँ पर हम ये टाइम देना है हमें। तो बेसिकली ये जो कॉन्फ़िगरेशंस थे ये हमने फायरवॉल बेसिस पे, या बेसिकली हम ये एक तरह से जो थर्ड पार्टी हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था उसके थ्रू से हमने उनको पेरेंटल कंट्रोल बेसिकली ये किया है। ऑपरेटिंग, हालांकि ये जितनी भी फैसिलिटीज होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे फायरवॉल या रूल्स लगा करके भी कर सकते हैं, लेकिन यूजर्स के लिए बेसिकली क्या है कि इसको कंट्रोल करना ड्रॉप एंड ड्रैग से करना बड़ा आसान रहता है, इसीलिए ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो यूजफुल रहता है बेसिकली। तो ये जो कुछ पेरेंटल कंट्रोल था जो कि क्विक हील के द्वारा दिया गया, उसको अभी हमने देखा है। आगे तो ये आज का सेशन लगभग हमारा ये यहीं पे हम समाप्त करेंगे, ऑलरेडी हम लेट हैं 20 मिनट। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो एग्जाम का लिंक है हम उसको ओपन करेंगे। अगर कुछ पूछना है तो डियर पार्टिसिपेंट यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Thank you, Prashant sir, for the wonderful session. It was an eye-opener for all of us. Okay, thank you, sir. So, should we conclude this session here? If no one have any queries, वासु जी लिंक ऑन कर दें। ओके, सो एग्जाम का जो लिंक है उसको ऑन कर दिया है, लगभग 15 मिनट 20 मिनट वो एक्टिव रहेगा, और उसके बाद में ये एग्जाम है वो कंप्लीट होगा। कल का जो सेशन है वो जैसा कि पहले बताया जा चुका है उसी के अकॉर्डिंग कल का सेशन होना है। एक बार अगर आप कहें तो मैं रिपीट कर देता हूं। टाइम टू टाइम कल का जो सेशन रहेगा, पहला सेशन है वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड ई वेस्ट पर रहेगा। दूसरा सेशन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, डॉक्टर पवन दुग्गल सर हैं उनका सेशन रहेगा जो कि सेफ गार्डिंग इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम टॉपिक रहेगा। और थर्ड जो सेशन है वो डॉक्टर LC बिश्नोई सर का रहेगा जो कि फेक जॉब पोर्टल्स और ऑफर्स के बारे में, डेटिंग एप्स एंड मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।